Good evening to all of you. Good evening to all of you. Good evening, all of you. Hello, guys. Good evening to all of you. Good evening. So, आमे करिवा स्टील रो डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर रो MCQ. Good evening all of you. Okay. तो एबे आमे जो कनेक्शंस रो टॉपिक पढी छु. सो वोल्टेड कनेक्शन ही जाई छी. वेल्डेड कनेक्शन ही गेला. एक्सेंट्रिक कनेक्शन रे वोल्टेड रो टाइप 1 टाइप 2 बतै दै छी. वेल्डेड रो टाइप 1 टाइप 2 बतैबार अछि जो कि बतैबी. ओके. तो एबे माने आमे बहुत किछि जिंसो पढी सारी छु स्टील रो जो कि बहुत इंपोर्टेंट. तो बेस्ड ऑन दोस टॉपिक्स जो जिंसो आपण पढी छंती किछि क्वेश्चंस गुडा को सॉल्व करिवा. तो अटेम्प्ट करिवा. स्टार्ट करंतु. स्टार्ट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. Question number 1. As per Indian standard AAPKA, for a nominal diameter of 12 mm bolt, the diameter of hole provided should be bolt पाई जदि bolt अछि 12 mm रो तो hole केते साइज रो प्रोवाइड हेबा कथा. Answer this particular question. What will be the correct answer? Option कोई चलिबे. कमेंट करंतु गाइस. D. बोल्ट डायमीटर ये तो 12 mm अछि. 12 mm पाई आमे 24 mm रो होल प्रोवाइड करिया कि डबल 15 mm. कोडल प्रोविजंस देखंतु. आई थिंक 12 टू 14 जाए. जो भी डायमीटर बोल्ट थिवो तारे 1 mm इंक्रीज होउची. सो आंसर मस्ट बी 13 mm. ओके. देखंतु. Note, as per IS 800, for a nominal diameter of 12 mm bolt, the diameter of bolt hole should be provided be 13 mm. Because देखो अच्छा 12 रू 16 जाए. Sorry, 12 रू 16. Okay, from 12 to 16. From 12 to 16. Diameter of hole D plus 1 in this range. Diameter of hole D plus 2. ये रेंज रे जदि डायमीटर थिबो. डायमीटर ऑफ होल D plus 3 जदि ग्रेटर देन 24 mm डायमीटर ऑफ बोल्ट अछि. But D is your nominal die of bolt. D dash is your diameter of the hole. Now एटा तो बोल्ट पाई. रिवेट पाई भी क्वेश्चन पचारि पारंती. तो रिवेट पाई भी कोडल प्रोविजंस मु लिखैथिली. बट आउट थरे गोट थरे एठी पढी नियंतु. रिवेट साइज in DMM. तापर रिवेट होल साइज D नॉट. रिवेट साइज जदि लेस देन इक्वल टू 25 mm अछि. रिवेट साइज जदि ग्रेटर देन 25 mm अछि. If rivet size is less than equal to 25 mm, then diameter of bolt is D plus, sorry, diameter of rivet hole is D plus 1.5 mm. Rivet hole greater than 25 mm, then diameter of bolt hole will be D plus 2 mm. Look at the codal provision. Good evening to all of you. लाइक कर देवे क्लासेस को. क्वेश्चन सॉल्विंग बहुत इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन. स्क्रीनशॉट नहीं चलिए जदि दरकार तो. क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3.
What will be the question number 2 answer? Wrought iron contains carbon up to, wrought iron contains carbon up to, tapre question number 3, steel structure are ideally suitable for impact load because they have what? Question number 2 and question number 3. Hello guys, कौन ହେଇଗଲା? No comments. सबू जिनस नोट्स रे मु प्रोवाइड करिथिली तो 3 रो बी, wrought iron contains carbon up to 0.25%. A will be right answer. These steel structure are ideally suitable for impact type of loading because they have toughness value. These are tough. एटा तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल रो बेसिक कांसेप्ट को यूज करेबी क्वेश्चन नंबर 3 को आंसर करि परथनते. ओके, इंपैक्ट लोडिंग पाइन मटेरियल टफ रहबा कथा. ओके, तो स्टील रो टफनेस वैल्यू रहुची, हेंस दीज आर मोर सुटेबल फॉर योर इंपैक्ट वैल्यू, इंपैक्ट लोड. नेक्स्ट एटी देखंतु, wrought iron contains carbon up to 0.25%. wrought iron has carbon 0.15 and cast iron, ଗୋଟେ ମିନିଟ, cast iron सुनंतु, wrought iron रो जो कार्बन परसेंटेज अछि wrought iron रो 0.15 to 0.25. This is the percentage. तापर cast iron 2 to 4%. सबुठु बेसिक cast iron रे रहउची कार्बन परसेंटेज. They may ask you. Okay. Good evening all of you. Good evening Asima ji. Cast iron रे 2 to 3%, 2 to 4%. तापर mild steel रे 0.15 to पाखापाखि ये एतिकी. Okay. तो remember this particular data, exam रे पचारि पारंती. Next, this particular question: if the thickness of thinnest outside plate is 10 mm, then the maximum pitch of rivet in tension will be taken as. Very good. Question number 4 answer करंतु. If thickness of thinnest outside plate, माने ये tack rivet पे पचारुछि. It is asking about tack riveting, I think. तार पिच विषय पचारुछि. मैक्सिमम पिच रो वैल्यू पचारुछि. रिवेट्स टेंशन रे अछंती. टेंशन पे केते 16T और 200 mm. रो मिनिमम वैल्यू 16T और 200 mm raw minimum value. तो 16 times T will be 16 into 10, 160 और 200 तारो minimum value. तो answer will be
160 mm ऑप्शन सी बहुत सिंपल क्वेश्चन थिला इजी क्वेश्चन थिला जस्ट हमको कोडल प्रोविजंस मन रखी थिले ये टाइप क्वेश्चंस गुडा को सॉल्व हे जिवो ओके रिमेंबर द कोडल प्रोविजंस नेक्स्ट answer this particular question for the compression member the distance between center of two adjacent fastener pitch माने पिच कथा कहूची ब्रैकेट रे लिखि दैछि कंफ्यूज न होवंतु पिच कथा कहिछि एठी से पे ब्रैकेट रे लिखि दैछि पिच इन अ लाइन lying in the direction of stress shall not exceed dash or whichever is less take T as the thickness of the thinner plate. Question number 5, that is pitch in case of compression. Very good, Umar. Option C will be correct. 12T or 200 mm, whichever is less. In tension, 16T or 200 mm. This is for tension. This is for tension. This is for compression. This is for compression. 4 or D. 4 or D थिला की 4 or C, okay. 5 or C. Very good. Next, ये क्वेश्चन करंतु इडा में रिसेंटली मु जो एक्सेंट्रिक कनेक्शन पढ़ाई थी based on that only this particular question is conceptual question. Solve this. When the line of action of load lies in the plane of the group of rivet or bolt and the center of gravity of rivet group does not lie on the line of action of the rivet, line of action of the load, the rivet is subjected to co-case avoida bracket connection 1 na bracket connection 2. This is the case of bracket connection 1. Okay, this is the case of bracket connection 1. Basically कौन कहूची, let's suppose एठी रिवेट गुडा आपण देई छांती, एठी सीजी अछि, ठीक अछि, तो लोडिंग एठु एमिति ऐड करूची, let's suppose p loading is acting, तो line of action of load is this one. जो सीजी अछि ये कौन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ लोड रे एक्ट करूची नाही, तो किछि ना किछि एक्सेंट्रिसिटी अछि ई क्लियर. तापर एठी लिखा है जी lies in the plane means in plane eccentricity रो केस, in plane eccentricity case, eccentricity case होची इडा. तो in plane eccentricity रे कौन डेवलप हेबो, ये p लोड को जते बडा हमें आ ऊपर ट्रांसफर करिया कनेक्शन ऊपर शियर विल गेट डेवलप इडा टू कंफर्म शियर सहित ये आउ जो ट्रांसफर करिया तो इट विल ट्रांसफर ए मोमेंट लाइक दिस p into e. अब ये जो मोमेंट अछि this particular moment is not your bending moment, this particular moment is your torsional moment. तो ये केस हमें सॉल्व करिथिलु. ओके, रिजल्टेंट force on bolt calculate करिथिलु and for design हमें कहि दिलु that resultant force whatever we have calculated must be less than bolt strength. और resultant जो bolt रे maximum आसीबो those bolts are called as critical bolt. Generally critical bolts are those bolts which are very close to the load. For example, this particular bolt will be critical bolt here in this particular figure. So shear and torsion, option number B, shear and torsion in plane eccentricity ro example eta thila. Option number B is the answer. Okay, ठीक. तो ये डिस्कस करिथिलु मु तो आर पूरा डेरिवेशन करिथिली, जस्ट हमको स्टेटमेंट ठीक से पढ़ियार अछि. ओके, आफ्टर स्टडीइंग द स्टेटमेंट परफेक्टली विजुअलाइज करंतु जिंस गुडा को से पाई पूरा परफेक्ट डायग्राम सब बनै करी मु आपन को जिंस गुडा को बतै छी. ओके, नेक्स्ट 7th नंबर क्वेश्चन.
very easy question number 7. The diameter of bolt hole with respect to nominal diameter of 12 mm to 14 mm of the bolt as per IS code should be. अबे टिके पूर्व ये क्वेश्चन आम देखी जस्ट एठी जो अप्रोच अच्छी क्वेश्चन पचारिवार जो टेक्निक अच्छी स्टेटमेंट को इंग्लिश रे यार सियाड़ बुलाई देछि बाकी आउ किछि नै ओके very good Umar, very good. Option number C will be correct. 1 mm d plus 1 na d dash will be equal to d plus 1. ये रेंज रे जदी बोल्ट रो डायमीटर अछि दो क्लियरेंस फॉर बोल्ट होल इज 1 mm एडिशनल d plus 1. yes or not? So option number C will be correct. very good Umar. Next, this question जस्ट एबे टिके पूर्व आम देखी डेटा एबे टिके पूर्व डेटा टा देखी जस्ट एबे टिके पूर्व डेटा आम देखी द कार्बन कंटेंट इन माइल्ड स्टील इज इन रेंज ऑफ लाइक करी देबे आईपीएल देखुचंती पिला माने लागुची हो आईपीएल पई हमें छाडी देबा टेंशन नाही किछि क्वेश्चन प्रैक्टिस करी छाडीबा ओके 8 रो ए वेरी गुड ओके 0.15 टू 0.3%. जदि ये रेंज टा देखिबे तो दिस विल बी रेंज फॉर अप्रोक्सीमेटली दिस पर्टिकुलर आंसर मे बी करेक्ट फॉर कास्ट आयरन. 2 to 4%. okay, for mild steel your option number A will be correct. very good. तो मन रखी दिबे नोट माइल्ड स्टील पाई 0.15 to 0.3%, लो कार्बन स्टील पाई अप टू 0.15%, माइल्ड स्टील रो सीधा हे गेला मीडियम कार्बन स्टील 0.35 to 0.65%, हाई कार्बन स्टील 0.65 to 0.75%. कार्बन कंटेंट जेमती जेमती बढ़िबो स्ट्रेंथ बढ़िबो बट ब्रिटलनेस कम ही चलिबो आउ सॉरी ब्रिटलनेस बढ़ी चलिबो डक्टिलिटी कम ही चलिबो ओके. माइल्ड स्टील रे टिके कार्बन कंटेंट लोअर साइड रे रहिबा जुगु आइ रे आपन को स्ट्रेंथ भी पाखापाखी ठीक ठाक मिल जाउची एंड डक्टिलिटी भी ठीक ठाक मिल जाउची. माइल्ड स्टील इज वेरी डक्टाइल वेरी टफ very ductile. Okay, mild steel means Fe250. Fe250. ये जो Fe250 ये जो 250 अच्छी, what is this particular 250 value? This is basically yield strength or characteristics strength of the steel, which is nothing but your yield strength. आउ गोटे पॉइंट रोचे we have another point. आउ गोटे पॉइंट कोन जते बेला हम डिजाइन स्ट्रेंथ लिखिबा whenever we will write design strength, then at that particular time हमें एडा कहूछु जो ductile material रोची, for ductile material the design strength is based on its yield strength value, but for brittle material the design strength is based on its ultimate strength value. For example, जते बेला हमें स्टील आरसीसी रे स्टील लिखुछु तो स्टील रो डिजाइन स्ट्रेंथ जो हमें लिखिबा
depending on fy रे किछि partial factor of safety which is your 1.15 हमें divide करू छु तापरे we get design stresses 0.87 fy but concrete रे जो strength हमें देखु छु okay that is your ultimate strength तो concrete is a brittle material ठीक अछि तो ये फैक्ट गुटे मन रखि देबे एग्जाम रे काम आसीयो आपन ओके नेक्स्ट आंसर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन काकू जाना कि एनीवन नो ये फार्मूला बहुत इंपोर्टेंट आपको गोटे नोट रे खाता रे लिखिबे आपण जदी जाना नहीं तो मु एबे बतै देबी गोटे नोट रे आपण खाता रे एंटर करंतु बहुत इंपोर्टेंट फार्मूला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डायरेक्टली ये टाइप आसी पारे फार्मूला पचारि पारंती और न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी बनै को दे पारंती लाइक कर देबे क्लासेस को anyone answer asini look if d is the gross diameter of rivet and p is the pitch of the rivet the efficiency of riveted joint ये riveted joint केस रे हम efficiency गुटे काढुथलु तो आपे गुटे फार्मूला आसुतला एमिति pitch minus diameter of rivet divided by pitch okay efficiency per pitch length एमिति हमें कैलकुलेट करूथलु if d is the gross diameter of the rivet and p is the pitch of the rivet then the efficiency of riveted joint is given by this particular formula p minus d upon p into 100 जतोड आपण efficiency percentage रे लिखिबे okay so by using this particular formula we used to calculate the efficiency आपको गुटे नोट रे एंटर करिवे ये फार्मूला नेक्स्ट क्वेश्चन तो बेस्ड ऑन दैट पर्टिकुलर फार्मूला ओनली ये क्वेश्चन आपन को पचारा जाईची कोन पचारा जाईची let 108 mm be the pitch of the rivet and 27 mm is the gross diameter of the rivet then efficiency of joint per pitch length in percent केते 108 minus 27 divided by 108 into 100 75%. Option number A means P minus D by P into 100. This is the formula. So 108 minus 27 divided by 108 into 100 75%. Option number A will be correct. Very good, Asima ji. Next, question number 11. 11 answer karantu. When the effect of wind or earthquake load is taken into account, the permissible stresses on rivet, bolt, ठीक है, tension rod may be exceeded by केते नु increase करा जाउची means permissible stress of connections रो पचारुची connections एटी दुईटा वैल्यू थिला
गोटे कनेक्शन रो इंक्रीज करूथुलो हम ये केस रे आ गोटे इंक्रीज करूथुलो इन केस ऑफ स्ट्रक्चरल स्टील तो कनेक्शंस केस रे केते रो इंक्रीज हेबो so in case of connection by how much percentage it will be increased in case of connection it is increased by 25%. In case of structural steel 33.33%. So option number A will be correct in this particular case. Option A will be correct in this particular case. Next, ये क्वेश्चन करंतु diameter of a rivet hole for given diameter less than 25 mm is usually considered as very good भगवती जी 12 रो ए रिवेट रो क्वेश्चन थिला ओके वेरी गुड नेक्स्ट ये क्वेश्चन करंतु फॉर फील्ड रिवेट द परमिसिबल स्ट्रेसेस आर रिड्यूस्ड बाय व्हाट परसेंटेज फॉर फील्ड रिवेट द परमिसिबल स्ट्रेसेस आर रिड्यूस्ड बाय व्हाट परसेंटेज सॉप रिवेट स्ट्रांग थिबो ना फील्ड रे रिवेटिंग करिले स्ट्रांग रहिबो फील्ड रे हमें कनेक्शन बनैबा सेटा बेसी स्ट्रांग रहिबो ना सॉप रे कनेक्शन बनैले बेसी स्ट्रांग रहिबो ऑब्वियसली हमें जदी कनेक्शंस टा को सॉप रे बनैबा तो बेसी स्ट्रांग रहिबो तो फील्ड रे जदी हमें कनेक्शंस बनौचू स्पेशली इन केस ऑफ रिवेटेड कनेक्शन तो सॉप रिवेटिंग रो टिके स्ट्रेंथ कम आसीबो तो लेट्स सपोज सॉप रिवेटिंग रो स्ट्रेंथ होची 100% देन एज कंपेयर टू सॉप रिवेटिंग the strength of field riveting is 90%. माने कितने रिडक्शन हैला approximately 10%. So option number B will be correct for this particular case. मन रखिथिबे गुडे फैक्चुअल डेटा टा एमिति छोटो छोटो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस एग्जाम रे आसी पारे ओके 10% less if strength of SOP rivet is 100%. If strength of SOP rivet is 100%, then field rivet ro strength है वो 90%. SOP rivet, this is your field rivet. Very good असीमा जी, very good. के भी स्टॉप करि परिबोनी ये थ्रो अपन रो सिलेक्शंस को वेरी गुड वेरी नाइस ऑल ऑफ यू वेरी नाइस ये क्वेश्चन रो आंसर करंतु न्यूमेरिकल क्वेश्चन टा कैलकुलेट करंतु अपन को जाना ओके यू नो टू प्लेट्स ऑफ Fe4110 ग्रेड एंड थिकनेस 14 mm and 12 mm are to be soft welded by a single V groove weld joint. The joint is subjected to a factor tensile force of 350 kilonewton. Assuming effective length of weld is 150 mm, the strength of weld is ये welding रो strength कहते what is the strength of weld is question number 13 numerical question टा
Assume answer. Single V groove weld, force carrying capacity, cross section area into permissible stress. So what is cross section area? Cross section area is equal to throat thickness into effective length. Effective length 150 mm. Throat thickness, single V groove weld means 5/8 of T minimum. So L effective into 5/8 T minimum into कौन करेगा permissible stress Fy divided by what? Fy divided by your partial factor of safety for the weld. But welding generally हमें कूट करूछु शॉप रे तो किछि आउ किछि दिया हिनी. अच्छा दिया हिच शॉप welded 1.25 clear. Fy is equal to 250 Newton per mm square. Fy yield strength is equal to 250 Newton per mm square. जते बेले वैल्यू गुडा को पुट करिवे सॉल्व करंतु 150 into 5/8 T minimum 12 mm 250 divided by 1.25 Newton ratio divided by 10 to the power 3. So you will get answer as 225 kilonewton. Option C will be correct for this particular question. Very good, Umar. Very good here. Gajab, Jabardast. Nice. Option C is correct. Next. According to specification, maximum pitch of rivet in compression. Maximum pitch of rivet in compression. Maximum pitch of rivet in compression. Very good. Option A, lesser of 200 mm or 12 T. T is thickness of the thinner member. Compression rate or tension rate. This particular question, very simple. Very good here. The design yield strength of steel according to IS. It's a working stress method wala code thila, but it is very easy to answer. Design yield stress of steel. Design stress in steel RCC रे भी देखो केते नउछु हमें.
very good. Design yield stress, okay, Fy divided by 1.15 FYD, design yield strength, which will be 0.87 Fy. Option D is correct. Very good. ये क्वेश्चन देखो तो गोटे फैक्चुअल डेटाटा जदि जना नहीं तो किसी टेंशन नहीं एबे मु बतई देवी मन रखिथिबे इंपोर्टेंट ओएसएससी रे कॉपी हेई पारे द मैग्नीट्यूड ऑफ टेंसाइल एंड कंप्रेसिव रेसिडुअल स्ट्रेसेस जतबे हम रोल्ड स्टील सेक्शंस बनउ छु ना रोल्ड स्टील सेक्शंस विषय बतई थी आई सेक्शन टी सेक्शन ट्यूबुलर सेक्शंस तो किछि किछि रेसिडुअल स्ट्रेसेस तारे रही जाई पारे तो टेंशन रे केते रही जाउची कंप्रेशन रे केते रही जाउची ता विषय रे एठी क्वेश्चन पचरा जाई छी तो इफ एनीवन नो देन आंसर आर मन रखी दिबे ओके मु क्लास रे बतेबाटा पाछे जाईथिली से स्टार्टिंग वाला ई बतेबार थिला 0.3 times fy and 0.5 times fy. This is the answer. Option B. तो ये डेटा का मन रखिथिबे एग्जाम रे पचारा जाई पारन ओके 0.3 and 0.5 0.3 and 0.5 next answer this question very easy. In design of steel structure using working stress method, the design working stress method of design, the factor of safety is applied to the factor of safety is applied to like कर देबे भाई भौनी माने क्लासेस को the factor of safety is applied to working stress method according जो factor of safety गुडा को हम अप्लाई करिवा को स्ट्रेस ऊपर अप्लाई करिवा working stress method very good यार according to working stress method material with stresses yield stress रू बेसी हेबा कथा ही नाही working stress method को यूज करी जते बेले भी आपण किछि भी गुटे क्रॉस सेक्शन डिजाइन करिवे there will be no crack development in it तो yield stress is that particular stress value corresponding to which crack start developing तो एठी yield stress ऊपर हमें factor of safety apply करू option B will be correct okay very good answer this what is the minimum edge distance from center of the bolt of diameter d to the nearest edge of the plate in case of rolled comma machine flame cut or sawn or planed edges edge distance ऊपर क्वेश्चन पचरा जाई छी very good Rojalin ji very good Amit bhai 1.5 times d okay 1.5 times d very good next ये क्वेश्चन करंतु as per IS 800 the minimum pitch of the bolt in a row of bolt is recommended as the diameter of bolt times केते minimum pitch good evening Rojalin ji good evening very good minimum pitch
should not be greater than, sorry, minimum pitch should not be lesser than, okay, should not be less than 2.5 times D. 2.5 times D ru besi ortha equal रहिबा कथा to make stress distribution uniform. Minimum pitch etiki. Option B will be correct. ये less than or greater than मन रखी दिवे आ ऊपर भी क्वेश्चन पचारि पारंती. Every point you must remember. Load on connection is not eccentric for load on connection is not eccentric for lap joint एठी गोटे प्लेट आ ऊपर प्लेट रखिए कनेक्शन बनौचंती तो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्सेस को देखंतु दिस इज द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स दिस इज द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स तो आंको मझे गोटे गैप रही गला ना लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स इज नॉट सेम तो से गैप रही जुए जुगु एक्सेंट्रिसिटी गोटे अछि दैट इज योर एक्सेंट्रिसिटी तो लैप जॉइंट रे एक्सेंट्रिसिटी रहिबो सिंगल कवर बट जॉइंट रे रहिबो बट डबल कवर बट जॉइंट रे रहिबो नहीं then what will be our answer here for this particular question the answer is double cover butt joint option C is the correct there is no eccentricity line of action of forces in the main members are same very good answer this question ये क्वेश्चन आसी थिला OSSC रे लास्ट एग्जाम्स रे according to IS 800 the distance between center to center of any two adjacent fasteners shall not exceed एग्जाम रे आसी थिला very good C 32T or 300 mm whichever is less 22 23 question number 22 and question number 23 22 रो A the partial factor of safety for steel as per IS 456 ठीक अछि 22A 23 very good
22 रो ए 23 कोन कहूची along a row ना एठी गोटे रिवेट एठी गोटे रिवेट तो बेसिकली ये डिस्टेंस टा पचारू पिच दिस इज योर रो बी पिच नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 क्वेश्चन नंबर 25 देखो तो क्वेश्चन नंबर 24 जदि आप जानू ना किसी प्रॉब्लम नाही अब क्वेश्चन नंबर 25 मु स्टिल पढ़ेला बेले जते बेले अनविन्स फार्मूला पढौतली ओके तो मु सेठी नंबर ऑफ बोल्ट पे गोटे फार्मूला लिखितली तो डायमीटर पे भी जने भाई पचारथिला तो ये फार्मूला मु से जगह रे लिखि नथली तो डायमीटर पे भी अनविन फार्मूला अछि एंड टू कैलकुलेट नंबर ऑफ बोल्ट भी अनविन फार्मूला अछि ओके तो मन रखि दिबे तो एठू आपण नोट करि नेबे 24 रो के देहबो आंसर एटा हाई स्ट्रेंथ फ्रिक्शन ग्रिप बोल्ट पाई ये गोटे डेटा तो अछि तो मन रखि दिबे एचएसएफजी बोल्ट पाई $25 D clear unwind formula this is the unwind formula for your diameter of bolt okay for your nominal diameter of rivet basically ये working stress method को use करूसला ये सब formula okay तो rivet पे ये सब formula थिला but आज एबे भी एग्जाम्स रे पचारू छंती आमे बोल्ट रो भी diameter गुडा को फाइंड आउट करिया पई केबे केबे ये formula यूज करू छु 24 रो A 1.2 आमे नउ छु एठी okay remember this 24A we generally take 1.2 and this is the formula unwind formula right formula D 26 27 26 रो किछि बुझा पड़ लागी 26 रो एडा केमती क्वेश्चन देछि भाई if T is the thickness of the plate tacking rivet should have a pitch in line not exceeding tack rivet रो पचारछि बिल्कुल सुभाशिष बिल्कुल बट आमे एलएसएम रे डिजाइन भी करि दउ छु डायमीटर ऑफ बोल्ट बट फॉर रफ कैलकुलेशन से अनविन फार्मूला को यूज करि परिबा आमे 26 रो कोन तो एबे टिके पूर्वरु आमे देखिथिलु बदे $26 and $27 26 रो हाँ 24 रो डेटा देई नथली टैक रिवेटिंग रो पिच कथा पचारछि टैक रिवेट रो पिच ए ना बी ऑप्शन ए और ऑप्शन बी in case of plate बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं की का को भी ठीक अच्छे वेरी गुड ओके 32T और 300 mm तापर एठी देखंतु rolled steel beams generally as a beam जो हमें यूज करू छु we use I section I sections को हमें यूज करू छु एज ए बीम तो I section जो रिप्रेजेंटेशन रहू छी ना डेप्थ okay basically this particular depth
जो वेब रो डेप्थ रोची ओके दैट इज द बेसिकली डेप्थ ऑफ द आई सेक्शन एंड वेट पर मीटर तो बेस्ड ऑन दिस हम पाखे डिफरेंट टाइप्स ऑफ बीम अच्छी स्टील रे हमें यूज करूँ ओके लाइक हेवी बीम्स मीडियम बीम्स वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ बीम तार वेट गुडा को चेंज होउछ डेप्थ तो पाखा पाखी सेम रहउछि बट इट्स वेट इज चेंजिंग so depth of section and weight per meter okay so this is the standard representation depth of section and weight per meter option A will be correct very good question 28 and 29 अल्फा पचारची अल्फा क्वेश्चन नंबर 28 रे अल्फा पचारची लाइक कर दे भाई भौनी माने क्लासेस को क्वेश्चन 29 तो बहुत इजी कमेंट 29C 29A (28D) ना 28 C and A very good this is the answer okay 12 into 10 to the power minus 6 something and this is the answer C and A okay double cover butt joint 30 and 31 30 and 31 very good 30 and 31 30 रो B इटा तो आपण आरसीसी रो भी कांसेप्ट रु माने सॉल्व करि परिबे आरसीसी रे भी टॉर्सन मु बतैथिली तो जो भाई भौनी माने आरसीसी रे भी टॉर्सन रो क्लास देखि चंती तांको भी ये जिंसोडा जणा थिबो हां कमेंट टिके लेट रे आसुची box type section मन रखिदिबे whenever torsion is coming on a member then we generally provide box type section से पई आपण देखंतु आरसीसी रे भी जतबे हम डिजाइन करथलु तो टॉर्सन पई जतबे डिजाइन करथलु तो हम शियर स्टीरअप ही प्रोवाइड करथलु व्हिच इज बेसिकली रिंग्स हम प्रोवाइड करथलु टू मेक बॉक्स टाइप ऑफ सेक्शंस तो बॉक्स टाइप्स ऑफ सेक्शन रो परफॉर्मेंस जेमति कि शाफ्ट रहउची ट्यूबुलर सेक्शंस रहउची अंकर परफॉर्मेंस इन टॉर्सन बेसी भलो okay so box type of sections we generally provide next grade of steel designated as Fe415 meaning kono it meaning nothing but the characteristic strength of steel is 415 newton per mm square okay so D and C
is the right code. Next, firing forces. सुनंतु ये विषय मु टिके एबे एक्सप्लेन करूची. ओके, जो जिंस मु एबे एक्सप्लेन करी बस एतिकी आपन को जणा थिबा कथा. लेट्स सपोज कि आपन एमती गोटे कनेक्शन बनेले. हैंगर गुडा को देखु जंती. हैंगर माने कोठी एयरपोर्ट रे हैंगर थाए. हैंगर रे कोन रखा जाउची? प्लेन गुडा को रखा जाउची. ओके, हैंग करी लटके करी माने रखा जाउची. तो सेठी ना बहुत बड़ा गोटे बीम थिबो. ठीक अछि, बहुत बड़ा गोटे बीम थिबो, मेंबर थिबो. ये मेंबर लेट्स सपोज कि मु गोटे टी मेंबर. ओके, लेट्स सपोज कि ये मेंबर गोटे टी मेंबर मु कनेक्ट करूची. एठी मु बोल्टिंग कर देली, एठी मु बोल्टिंग कर देली. लेट्स सपोज दिस पर्टिकुलर मेंबर इज वेरी थिन, वेरी थिन. ये मेंबर जदि बहुत पतला ही थिवो, ये जो मेंबर मु कनेक्ट करी छी, देन आइ रे हमें किछि जिंस किछि वेट लगेबा. वेट किछि लगेबा. जतबे आइ रे हमें वेट लगेबा, ये मेंबर थिन थिबा जुगु ना ये लटकी जीवो. केमति लटकीबो देखंतु. एटा एमति किछि, ये एमति किछि लटकी जीवो ये. ओके, ये एमती लटकी जीवो बट भांगीबनी. लटकी जीवो एमती किछि लटकी जीवो. आज वो ये जो जगह रे कनेक्शंस अछि एठी किछि एडिशनल टेंसाइल फोर्सेस विल कम. किछि एडिशनल टेंसाइल फोर्सेस आसीओ से कनेक्शंस ऊपर. दोस एडिशनल टेंसाइल फोर्सेस आर ओनली नथिंग बट योर फायरिंग फोर्सेस. ओके, ये बेसिकली कोन पे हुए गोटे मोटा मेंबर रो थिन मेंबर को लटके कनेक्ट कर दै छथि. अब ता ऊपर से थिन मेंबर ऊपर जतबे हम लोड लगेबा, then connections of a additional tensile nature of forces assay, that particular forces are called as firing forces. So firing forces generally of tensile nature, tensile forces on the connections plus ketebele when a thin member is connected to a main member. Okay, setebele तो ये केस रा में कोई परिवा. सुनंतु option C is the correct. Tensile force due to the flexibility of connected parts leading to deformation. ये member और deformation हैला. ओके, member पतला थिला, flexible थिला, member और deformation हैला, connections रे tensile forces develop हैला. Those tensile forces are your firing forces. Airport रा hanger रे ये जिनसटा common. hangers बस एतिकी मन रखंतु. ये दुईटा पॉइंट सब फायरिंग फोर्सेस रो ये क्वेश्चन ही पचार जीवो कि फायरिंग फोर्स टा कोन. ये क्वेश्चन आपन रो सॉल्व हे जीवो. ओके, बुझावे लागी. 32 सी, वेरी गुड. 32 रो सी, फायरिंग फोर्सेस आर टेंसाइल फोर्सेस. ये क्वेश्चन करंतु. एटा तो बतैथिली. रिडक्शन इन द डिजाइन शियर कैरिंग कैपेसिटी of bolt due to packing plate in excess of 6 mm is expressed as (33 row). सुचिस्मिता जी, वेरी गुड. थर्टी थ्री आंसर कौन है? ऑप्शन ए ना ऑप्शन डी? खाता चेक करंतु. ऑप्शन ए और ऑप्शन डी. डी कंफर्म ना ए? सी तो नथिला. डी और ए. अरे खाता रे सीधा सीधा लिखी छी.
आ कुआडे कुआडे आंसर आसुची खाता चेक करंतु बोल्ट ये बोल्टेड कनेक्शन रे लिखी थी नी very good Umar. Option number D is correct. Okay, this is the reduction. Calculate तो करी थी नीडा वैल्यू बताई थी कोडल प्रोविजंस थिला. Okay, D is the right answer. Question number 34. Gauge length of steel specimen as per codal provision is. Gauge length means that particular length which we consider in tension test. Okay, that particular length is your gauge length. So what is the gauge length value? Very good Ananya ji, Suchismita ji, very good Nihar ji, very good. Very good. Option D will be correct. 34 row D is the right answer. Very good. ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन करंतु फ्रॉम एक्सेंट्रिक कनेक्शन. ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन मु ऑलरेडी एक्सप्लेन करी सारी छी. ओके, सॉल्व दिस पर्टिकुलर न्यूमेरिकल कैलकुलेशन. Calculate the resultant force on the bolt. Everyone try to solve it. What will be the bolt strength? अच्छा, bolt strength नहीं, resultant force on the bolt. Maximum design force. Maximum design force. पूरा बहुत बढ़िया से एक्सप्लेन करी थी क्लास रे. एटी को बोल्ट क्रिटिकल है वो. कैलकुलेट करू चाहती ना मु कैलकुलेट करी. दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे. ये सब क्वेश्चन बोल्टेड कनेक्शन रू थिला. 35 क्वेश्चंस हमें सॉल्व करिलु एबे. एमिति ही सब चैप्टर रो क्वेश्चंस गुडा को मु सॉल्व करे देबी जो कि इंपोर्टेंट चैप्टर रहिबो, माने इंपोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज रहिबो. सॉल्व करू छथि ना करिबी. देखंतु सबुटु फर्स्ट
ये पचारुची मैक्सिमम डिजाइन फोर्स मींस मैक्सिमम फोर्स ऑन व्हिच बोल्ट इज कमिंग को बोल्ट ऊपर मैक्सिमम फोर्स आसीबो क्रिटिकल बोल्ट तो मु कोन कोइ छी जनरली द बोल्ट व्हिच इज वेरी क्लोज टू द लोडिंग ये वाला बोल्ट बहुत क्लोज अछि लोडिंग रो तो ऑन दिस पर्टिकुलर बोल्ट मैक्सिमम लोड बेसिकली आसीबा कथा तो से मैक्सिमम लोड रो वैल्यू केते आसीबो फर्स्ट ऑफ ऑल देखंतु जदि ये फोर्स को ये कनेक्शन रो सीजी रे ट्रांसफर करबा एटी टोटल पांचटा बोल्ट अछि केते बोल्ट अछि भल से देखंतु वी हैव टोटल 5 बोल्ट्स 1 2 3 4 5 पांचटा बोल्ट अछि तो जते बडे ये फोर्स को हमें ये सीजी रे ट्रांसफर करबा वी विल गेट टू टाइप्स ऑफ फोर्सेस तो माने गोटे फोर्स गोटे मोमेंट एबे देखंतु ये जो फोर्स आसीबो सीजी ऊपर लेट्स सपोज ट्रांसफर करिली ओके ऑन दिस सीजी 450 किलो न्यूटन तो आज को देखंतु एटा गोटे आसीबो आ गोटे मोमेंट आसीबो मोमेंट इज ऑफ दिस टाइप ये नेचर रो 450 into 160 mm नाउ सब टू फर्स्ट हमें कैलकुलेट करिवा डायरेक्ट shear force on each bolt is 450 divided by 5 एतिकी किलो न्यूटन तापरे टॉर्सनल शियर केते आसीबो देखंतु टॉर्सनल मूवमेंट tm divided by what टॉर्सनल मूवमेंट divided by summation of r square ठीक अछि summation of r square into ri एमिति तो this will be your torsional shear माने torsional shear force just a minute बिल्कुल दिस विल बी दी टॉर्सनल शियर फोर्स ओके एबे देखंतु सुनंतु टॉर्सनल मोमेंट रो वैल्यू केते किलो न्यूटन दे कैलकुलेट करिवे ना आपण किलो न्यूटन दे कैलकुलेट करिवे तो ठीक अछि ताइरे करि नियंतु बट एठी आर औरी इडा किलो न्यूटन एमएम रे हम कैलकुलेट करिवा याडे याडे कैंसिल आउट हे जो सब कैंसिल आउट हे जो ठीक अछि कैलकुलेट इन किलो न्यूटन एमएम तो जो टॉर्सनल मोमेंट वैल्यू आसीबो द टॉर्सनल मोमेंट वैल्यू इज 450 into 160 किलो न्यूटन mm डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ r स्क्वायर माने ये कनेक्शंस रो सीजी रो रेडियल डिस्टेंसेस 150 150 150 150 ओके तो 4 times 150 4 into 150 अबे 4 into 150 mm sorry summation of गुड मिनट r स्क्वायर थिला ना हाँ r स्क्वायर थिला ओके r स्क्वायर मींस 150 square plus 150 square plus 150 square plus 150 square 4 into 150 square एतिकी mm square into which bolt is nearer to the load ये वाला बोल्ट r केते आ ऊपर हम टॉर्सनल शियर कैलकुलेट करिवा r केते 150 mm तो एठू आपण कैलकुलेट करंतु ये टॉर्सनल शियर फोर्स और डायरेक्ट शियर फोर्स हमें कैलकुलेट करिलु डायरेक्शन देखंतु ये जो बोल्ट अछि लेट्स सपोज दिस इज द बोल्ट मोमेंट एमती ये पटे एमती क्लॉकवाइज एक्ट करूतला
तो डायरेक्शन ऑफ डायरेक्ट शियर डाउनवर्ड, डायरेक्शन ऑफ टॉर्सनल शियर भी डाउनवर्ड एक्ट करियो ये पर्टिकुलर बोल्ट रे। तो डायरेक्ट शियर एफडी रो भी डायरेक्शन सेम एंड एफटी रो भी डायरेक्शन सेम। तो एफडी एमटी कैलकुलेट करिले, एफटी एमटी कैलकुलेट करिले द मैक्सिमम फोर्स रूट अंडर डायरेक्शंस अंक मजरे किछि एंगल नाही, एफडी रो स्क्वायर प्लस एफटी रो स्क्वायर। आंसर कौन तो एबे? Now tell me the answer. Very good. Option number A, 150 kilonewton. 150 kilonewton. Like this, small numerical question may come from this particular eccentric connection topic. ठीक अच्छे जो कि टॉर्सन वाला में मु एबे एक्सप्लेन करिली। वेल्डेड वाला गोटे क्वेश्चन मु ऑलरेडी क्लास रे आपन को करई थिली लास्ट क्लास रे। ओके सो एति की आज थाउ सो गोटे क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन आज मु नै करासिली। आमे काली टू आमे क्लास कंटिन्यू करिवा ऑफ दिस पर्टिकुलर स्टील। तो काली जो टॉपिक गुडा को आमे पढिवा किछि किछि इंपोर्टेंट टॉपिक पढिवा, तापर एक्सेंट्रिक कनेक्शन से वेल्डेड वाला जिंसटा अछि सिटा बतैबी। काली आमे टेंशन मेंबर भी स्टार्ट कर दवा। ओके अब किछि टॉपिक एजम्पशंस अछि, एजम्पशंस इन वोल्टेज कनेक्शंस, फेलियर इन वोल्टेज कनेक्शंस से सब ऊपर टिके आमे डिस्कशन करिवा। देन आफ्टर वी आर गोइंग टू स्टार्ट योर टेंशन मेंबर tomorrow only. So most probably tomorrow morning I will take classes of design of steel structure. So any doubt in this particular question? ये थ्योरी रे मो पूरा डेरिवेशन बतैथिली बहुत बढ़िया से बहुत डिटेल रे से जिंसटा जो बुझी छांती तो क्वेश्चन डायरेक्टली सॉल्व हो जाई छांता। हमको बस डायरेक्ट शियर फोर्स कैलकुलेट करिया थिला, टॉर्सनल शियर फोर्स ऑन द क्रिटिकल बोल्ट। क्रिटिकल बोल्ट इज दैट पर्टिकुलर बोल्ट व्हिच इज नियरेस्ट टू द लोड। तो एठी ये जो बोल्ट अछि क्रिटिकल बोल्ट, ये बोल्ट ऊपर डायरेक्शन ऑफ डायरेक्ट शियर एंड टॉर्सनल शियर इज सेम। ओके द डायरेक्शंस ऑफ डायरेक्ट शियर एंड टॉर्सनल शियर इज सेम, so angle between them is 0. So this will be the okay answer. Like this you have to find the result, fd square plus ft rho square. Okay clear? Okay then जय जगन्नाथ भाई भौनी माने I am ending this particular MCQ session now. Welded connections ऊपर MCQ करिवा। Okay so thank you very much, all the best. काली सकाळे मिसुची 9:30 to 10 PM मझे 10 एप्रोक्स आमे स्टील रो क्लास टा स्टार्ट करिवा।